ये आपका सॉफ्टवेयर है ओमनिया, इसको ओपन करेंगे। वर्जन 2.4.4 है। पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले डेटाबेस में जाएंगे, एक प्रोफाइल बनाएंगे, जो भी सब्जेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन सही सही पुटअप करेंगे। मैं अभी ABC करके बना देता हूँ। एथनिक ग्रुप जहाँ से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ से हैं तो नॉर्थ का, साउथ से साउथ का, और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए इंडियन आएगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी है डाल देंगे, मैं कंसिडर करता हूँ 2000 अभी। और जेंडर, कोई अगर आप रजिस्टर ID और हॉस्पिटल की मेंटेन करते हैं तो ID डाल देंगे, मानते हैं 000 समथिंग है। बाकी डिटेल्स कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें। सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी एज कैलकुलेट कर लेगा। हाइट स्टेडियोमीटर से लेंगे, मान लेते हैं 165 मीटर का बंदा है, सेंटीमीटर का, और वेट 60 kg है। हार्ट रेट ऑटोमेटिकली 220 माइनस एज ये कैलकुलेट कर लेगा। 220 माइनस 25 आपका 195, 194.5 आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली भी ले लेगा। ऑर्डर नंबर अगर आपको पता है, प्रोफाइल नंबर कितना है। फिजिशियन जो भी आपके एग्जिस्टिंग डॉक्टर हैं उनमें से किसी एक का लेंगे। ऑपरेटर में जो भी यहाँ पे ऑपरेटर हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम वो ले लेंगे। और सीडेंट्री या लो एक्टिविटी यहाँ पे लेना है, अगर वो सीडेंट्री सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। रीज़न फॉर विजिट जो भी है, मैं अभी यहाँ पे डेमो कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे। ये आपकी सब्जेक्ट प्रोफाइल बन गई। यहाँ पे दिस इज़ सेलेक्टेड। अगर आप यहाँ से कुछ एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपकी विजिट प्रोफाइल बन गई आज की डेट की, 10 जुलाई 25। अब इसके आगे में जब आप टेस्ट सेलेक्ट करेंगे, जिसमें 3 तरह के टेस्ट हो रहे हैं, स्पायरोमेट्री, मेटाबॉलिक और ECG। स्पायरोमेट्री में ये 6 तरह के टेस्ट होते हैं। पोस्ट वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ऑफ lungs through force maneuver, pre and after taking inhaler drug we can perform post. Then the slow vital capacity of lung through slow maneuver and the post version. Then the minute ventilation we have to know. Then this is maximum voluntary ventilation, either we can perform for testing or for breathing practice also. और COPD पेशेंट और अस्थमेटिक पेशेंट है उन्हें ये करा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की है। देन फोर्स वाइटल कैपेसिटी चैलेंज, अगर डोजीमीटर है देन इन दैट केस वी कैन परफॉर्म दिस ऑल्सो। देन इन टेस्टिंग मेटाबॉलिक वी हैव 2 ऑप्शन, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग REE, resting energy expenditure through mask, we will perform only cardiopulmonary exercise testing. Here we have 2 options, this one is CPET breathe by breathe, this one is CPET mixing chamber। ये इसमें नहीं है, ये अलग से होता है। We will go for CPET breathe by breathe। Now this screen will prompt, so we'll start it। Now it will ask for air calibration, it is not mandatory, we can select no। Now this will give us this prompt here. Options are test type, so we have 3 options, maximal, submaximal, other। So if it is maximal, we'll perform maximal। If we want data with some alternate time, so we can select, or we'll put none। The subject type, if it is healthy we'll select healthy, if it is clinical we'll select clinical। In clinical it will give us the estimated predicted data of VO2 max। Here in ergometers we have multiple options, we can select for this system where we have supplied, this is Cosmet treadmill V4 kmh, and we have lots of parameter,
some of parameters are designed, some of are international, like Bruce KMH. This is the general protocol we use here in the department. And if we have already performed the spirometry, it will take the data from that test. Here we don't need to put it manually. Now here are integrated devices, so we can have heart rate source from multiple way. Either we can select none, or through metabolic cart, or through PC software ECG, or through ergometer. And these are not, we generally don't use with our system. So this, but if we have, we can select it. So normally we'll take this PC software ECG. This is the SpO2 source we have here. So this is connected to metabolic cart, so we are selecting metabolic cart. For the blood pressure and IBP, we have this Suntech Tango M2, so we have connected this Tango, and the port is COM3, and these are not necessary, PhysioFlow, and these are, we will not select these, we'll put none. Now if we are ready with the subject, we have already instructed subject what to do, how to perform test. We'll put this mask onto the subject and will command OK. It will prompt this screen also here. Parallelly, if our ECG is connected and is in working condition, it will start. Right now we have not powered on this ECG, that's why it's signaling. Now both the screens are appearing. Now we will put this and will wait. Now randomly I'm just putting this on my mouth. Now after putting this, it will take data. Sorry, it should be connected, it's not connected right now. Now I'll after a certain time it starts taking reading. Now we can select to the record. Once we put record, it asks to allow the treadmill, so now treadmill is connected. Now as per our exercise, it will show the data and reflect the data. Now once we are done, we can select recovery, and whatever protocol that will show here, the stage, like here after a specific time it goes to 0 and the treadmill starts taking the elevation and the speed, and these are the parameters we are getting: time, VO2 per kg, VO2, VCO2, RQ, expiratory ventilation, minute ventilation, respiratory frequency, tidal volume, FeO2, FeCO2, FiO2, FiCO2, heart rate, speed grade and phase. So now it will start reading once the protocol is indicating that. So now it will automatically go to the set elevation and the speed. We can see here it will go to 2.7 and the elevation will be 10%, and the next load after 3 minutes, here it will go to 4 km and 12% of the elevation. Once we are done, we can select this recovery. Once we will set recovery, it will automatically go to the down to the 0% elevation automatically, and the speed will remain 2.7 as we have already created in protocol. Now it will run for 3 minutes for the recovery phase, and then after we can stop the test once recovery is done, and we can stop the treadmill as well. Thank you.